Namaste, everybody. Namaste. Wonderful to see all of you. Narendra. हमारा भी काम हो रहा है एमजी की कृपा से. अरे नहीं, सब काम ईश्वर कराते हैं. Namaste, Arvind, Snehal, Ratnali. Wonderful to see all of you, Chandrasekhar, and so many. I've just missed out on your names. So don't feel. Rajinder, Rarewa, good to see you from Suni. He says, I and Sunita, we both are there, sir. हम एक ही login से दोनों बैठे हुए हैं, देख रहे हैं. Good to see you, Naresh, Santosh, Rajinder. Great, wonderful, wonderful. चलिए बहुत दिन हो गए. And those of you who have joined in for the first time, namaste, welcome to Happy Minds. This is a Happy Minds family. Week after week, Saturday after Saturday, month after month, हम लोग मिलते हैं. And this is an amazing family of dynamic, powerful, energetic, vibrant. और क्या बोलूं तुम लोगों को, that you are there every Saturday. I think this is what you deserve, to be called, to be referred to as awesome people. Awesome. Namaste, Sarveshwar, Sripal. Great, great. And namaste, all of you joining me on YouTube. Welcome on YouTube, and look forward to some beautiful things which I'll share with all of you. And but before that, a few success stories which I have got from a few of you. The first success story is it was actually given last week, and I could not, because I had my the entire sharing segment full, so I could not share many more success stories. But yeah, and this is from Anjuman. I think she is from Delhi, and she says, I would like to take a moment to say thanks and express my gratitude towards Chrysalis team and WhatsApp group members of Healthy Me Challenge. And she was a part of the Healthy Me Challenge there, and she says, she has given a long list of points which are there. She says, I started exercising regularly, gave up on sweets, my favorite jalebi, ice cream too. I started taking stairs, avoided junk food, maida. I avoided soiled. I started walking regularly for 60 minutes. I can now walk for 60 minutes. Initially, I could hardly walk for 10 minutes, and I stay motivated and alive most of the times. I promise that I will be more healthy by my birthday, which is in October. And I thank you once again. And I want this group to continue in spite. The challenge is over. Oh, thank you so much for sharing, Anjuman. And I'm sure, I don't know if you're there today or not, but thank you for sharing with us your journey, your areas of improvement. And I feel that ये sharing से जो होता है ना, kind of it gives us also a feedback that whatever we are doing, जो भी हम efforts डाल रहे हैं, जो भी हम अपने तरफ से मेरी team जो effort डाल रही है, we are also seeing some results happening. And that is why I ask everybody, do tell us, do share with us what are your areas of improvement. आपने कहाँ पर कामयाबी पाई, आपने कहाँ पर अपनी life को अच्छा बनाया. Because in organizations, I always say that get a regular feedback, and feedback का आना बड़ा जरूरी है. So get regular inputs from your team members. So you meet your team members और उनसे आप पूछते रहो, बार-बार पूछते रहो कि what we are doing, is it making sense? Is it happening right? And the team will tell you a lot of things, because ये वो लोग हैं जो मैदान जंग पे हैं. They are the ones who are on the field. They are the ones who are fighting it out day and night. तो उनसे जब feedback आता है तो आपको एक real time idea आता है कि आप क्या कर रहे हो, प्रोग्रेस कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, कहां पर अटक रहे हो. सो गेटिंग अ फीडबैक इज सो वेरी इंपॉर्टेंट. सो नॉर्मली क्या होता है, एंटरप्रेन्योर्स अपने फीडबैक्स सिर्फ कस्टमर्स तक लिमिटेड रखते हैं. दे डोंट टेक फीडबैक फ्रॉम वेंडर्स एंड फ्रॉम द टीम मेंबर्स और इंटरनल कस्टमर्स. आई थिंक दैट्स आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. सो आप लोग मेरे इंटरनल लोग हो, आप लोगों से जब मुझे फीडबैक मिलता है दैट यू हैव डन समथिंग इन लाइफ, तो थोड़ा सा खून बढ़ जाता है, थोड़ी सी हिम्मत बढ़ जाती है, और एचएम्स को कंटिन्यू करने का एक अंदर से नया एक जुनून पैदा होता है. And so that's why I always say, आप अपने शेयरिंग्स करा करो. और दूसरा, जब शेयरिंग करने की, I remember long back, somewhere around 2004 की बात है, और उधर हमारे physical happy minds होते थे. So Rachna, my wife, those of you who don't know her, she would regularly attend Happy Minds. But then 2004 she was pregnant, she was expecting, and then वो last के कुछ महीने she could not come. And then once the babies arrived, उसके बाद काफी समय 5-6 महीने it was difficult for her to come for Happy Minds. And one day उन्होंने मुझसे शेयर किया कि
I've noticed one change in my life. I said, क्या? She says, पहले मैं regularly हर हफ्ते एचएम जाती थी. So there was something which I would look forward to sharing. क्योंकि हर हफ्ते शेयरिंग होता था. हर हफ्ते हमारा एचएम में I would speak for some time and then the half the time some participants would come and share. So Rachna would always come and share something on Happy Minds. So she says जब से Happy Minds बंद हुआ तो मेरी शेयरिंग बंद हो गई. शेयरिंग बंद हो गई तो उससे क्या हुआ? Somewhere the week has become dull for me. नहीं तो शेयरिंग होता था हर हफ्ते कि मुझे शेयर करना ही है, तो मैं हफ्ते में कुछ ना कुछ करती थी जो शेयर करने योग्य हो. And she says, now I'm looking back, maybe I'm so involved in my motherhood that I'm not able to take out time. But ये भी एक बहाना है because टाइम तो निकाल सकती हूँ कुछ ना कुछ करने का. तो वो शेयरिंग के प्रेशर से कहीं ना कहीं पूरा हफ्ता we look forward to doing something great. और मैंने आपसे बोला था ना कि these are weekly shots, right? Happy Minds are weekly shots. तो ये शॉट्स लेते रहो और अपनी जिंदगी को एक एक कदम आगे बढ़ाते रहो. एंड जैसे जैसे जिंदगी आगे बढ़ती रहेगी, this means somewhere what you're doing is making sense. What you're doing is right. What you're doing is a lot better than what you did a week before, a month before. तो जिंदगी में जब उम्र बढ़ रही है, हम प्रोग्रेस कर रहे हैं towards a higher number in our age. So I think we should also progress in the way we function ourselves, in the way we conduct ourselves. है ना ये जरूरी कि हम भी उसमें अपने काम करने के तरीके में अच्छे बने, अपने बिजनेस करने के तरीके में अच्छे बने. Yesterday we had a wonderful session on fortifying our future, and we had a hall full of people, which I believe were entrepreneurs, mostly were entrepreneurs. And I was sharing with them कि business बड़ा हो ना हो, it doesn't matter. लेकिन business अच्छा तो होना चाहिए ना. अच्छे का मतलब क्या? जो आपके काम करने का तरीका वो तो अच्छा होना चाहिए ना. आपके जो लोग आपके आ रहे हैं ऑफिस में, उनके लिए एक अच्छा माहौल होना चाहिए. So it is not about how big you do, it's all about how you do. बिकॉज़ आप उस बिज़नेस में 8, 10, 12, 15 घंटे दे रहे हैं, फिज़िकली एंड मेंटली यू आर देयर 24 आवर्स. तो जिस चीज़ में आप डूबे हुए हैं, घंटों-घंटों, जिस चीज़ में आप अपनी ज़िंदगी का मेजॉरिटी ऑफ द टाइम दे रहे हैं, अगर वो चीज़ अच्छी नहीं है, वो अगर खुशबू नहीं दे रही है, वो अगर आपको इज़ नॉट काइंड ऑफ नर्चरिंग यू, तो आप उस गंदगी से बाहर आ रहे हो, फिर वो गंदगी हो जाती है ना. तो आप रोज चिड़चिड़ करके आते हो, रोज आप चिलम-चिली करके आते हो, कहीं कुछ उल्टा-सीधा हो रहा है, वहाँ से आप कुछ करके आते हो एंड देन यू ब्रिंग दैट फ्लेवर इन योर लाइफ और फिर उसी फ्लेवर से बाकी रोल्स में आप जाते हो. बिकॉज़ वो इतना बड़ा पार्ट है आपकी लाइफ का कि वो उसका आपके फ्लेवर चढ़ना ही है. यू कैन नॉट से दैट माय बिज़नेस लाइफ विल नॉट हैव एन इफेक्ट ऑन माय सेल्फ और ऑन माय अदर रोल्स. इट विल रब ऑफ इन सम वे और द अदर. तो बड़ा ज़रूरी है कि हम अच्छे बने और फिर जब अच्छे बनते हैं तो फिर जिस एरिया में हम होते हैं उस एरिया में अच्छा काम होता है. सो आई थिंक इफ यू आर कंज्यूमिंग फ्रॉम दिस वर्ल्ड अ वीक एंड अ वीक मींस 168 आवर्स, हर हफ्ते 168 घंटे हम कंज्यूम कर रहे हैं. तो वो 168 घंटे जो है हमने कंज्यूम किया. इट शुड नॉट बी दैट वो कंज्यूम किया और सुबह फ्लश करके निकल गया. इट शुड ऐड ऑन ना. जो खाना खा रहे हैं तो उससे हमारी बॉडी बन रही है ना. इन द सेम वे जो हम 168 घंटे कंज्यूम कर रहे हैं तो हमारा दिमाग बनना चाहिए, हमारा हमारी आदतें अच्छी बननी चाहिए, हमारा कम्युनिकेशन अच्छा बनना चाहिए. आई थिंक दैट्स व्हाट इट इज. और मैं बार-बार एवरी हैप्पी माइंड्स आपसे यही बात कर रहा हूँ और मैं आपके बार-बार यही बात करूँगा. आई विल पुट प्रेशर ऑन यू कि अगर आप मेरा टाइम कंज्यूम कर रहे हो, राइट? देन यू हैव अ रिस्पांसिबिलिटी. आप पे लोड है, आप पे बोझा है और आप पे मैं बार-बार कॉन्शियसली डाल रहा हूँ कि इफ आई एम इन्वेस्टिंग माय टाइम, then you have a responsibility to make your life better. You cannot just live the way you were living last week. You got to make it a lot better than what it was. And that is the beauty of we all coming together. हम साथ भी हैं और अच्छे नहीं बन रहे तो फिर साथ क्यों हैं? In fact, that's the definition of a relationship. कि हम जिस रिश्ते में होते हैं, उस रिश्ते में जिसके साथ हम हैं, वो तो अच्छा बनना चाहिए ना इंसान हमारी वजह से. कहीं ऐसा तो नहीं कि हम रिश्ते में हैं और हमारी वजह से वो इंसान और खराब बनते जा रहा है. हमारी कुछ बुरी आदतें उस पे आती जा रही है. तो हमारे होने से कोई इंसान अच्छा बनना चाहिए. हमारे होने से उस रिश्ते में जान आनी चाहिए. तो मेरे होने से आपकी लाइफ में कुछ असर होना चाहिए. ऐसे मैं आता हूँ. दिस अप्रोच इज़ व्हाट आई ब्रिंग टू हैप्पी माइंड्स एंड आई फील दैट
आपने भी ऐसा ही अप्रोच रखना चाहिए, that your presence in Happy Minds should make so many other people better because of the way you have lived. And if you have lived well, I would love to hear that. Hmm? So thank you for sharing with me, Anjuman. And ये क्या है? Sir, I'm feeling low today, feeling bad about double standard behavior of my employer. How can I overcome this? I don't know what is the double standard behavior which your employer does. So I feel I don't know the entire story. Jalis Shahad, right? That's your name. And without knowing the entire story, commenting and giving inputs will be not right. But if you're feeling low, right, it can be because of your employer, it can be because of your employee or anybody. It can be because of your neighbor's wife also. If you're feeling low, it's okay. First, acknowledge that feeling. It's I'm feeling low. Acknowledge it, right? Don't worry about it. It's a feeling which is there. It's there. Acknowledge it, but don't go along with it. Can you be an observer? Can you just be an observer of the feeling which you're going through? तो आप दर्शक बन जाओ, आप इसमें प्लेयर ना बनो. जब आप दर्शक बनोगे तो आप अपने उस फीलिंग को ऐसा जाते हुए देख पाओगे. जब आप खिलाड़ी बन जाओगे तो आप उस फीलिंग के अंदर डूब जाओगे और उसके साथ आपका युद्ध चालू हो जाएगा. एंड आप उसमें पूरे रम जाओगे और वो फ्लेवर आपके हर एस्पेक्ट में दिखाई देगा. सो आई फील दैट जैसे परेड जाती है ना, हम बाहर खड़े होकर परेड को देखते हैं, हम कहते हैं वाह कितनी अच्छी परेड है. आई थिंक दैट्स हाउ इट शुड बी विद नेगेटिव इमोशंस. तो कभी भी नेगेटिव इमोशंस आते हैं, फर्स्ट एक्नॉलेज इट, अरे परेड आ गई. सेकंड, लेट द परेड पास बाय. थोड़ा ना ऐसा होता है कभी परेड जारी होती है तो आप जो है परेड में चल देते हो साथ में, राइट? ऐसा नहीं होता ना, आप सिर्फ देखते हो परेड को कि वो बैंड बाजा लेके आ रहे हैं, तो आप सिर्फ देखते हो, एंजॉय करते हो और उस बैंड बाजे को जाने देते हो, राइट? वो तो किसी और की बारात है, आप कहाँ नाच रहे हो उसके अंदर यार? वो तो एम्प्लॉयर की तुम्हारी बारात है, तुम एम्प्लॉयर की बारात में नाचने लग गए हो, हाँ? और फिर कह रहे हो सर मजा नहीं आ रहा है. सो व्हाट ही हैज डन, व्हाट ही हैज सेड, वो उसकी बारात है, लेट इट पास बाय एंड यू वॉच इट फ्रॉम आउटसाइड. So if you were to behave like this, you will see that you will be a lot more relaxed. And then जब आप relax हो जाओगे, फिर आप next step पे आओ कि what is that thing which I could have done better, right? Which could have avoided this situation, right? If I could do better. And if you have nothing to do which you could have done better, then you say, I was good on my part. Right? And third step is, do you want to stay with that person in your life? You decide. If employers can fire employees, employees can also and should have the power to fire their employers. चलो आज इतना ही बिजनेस साइड में. लेट्स कम ऑन टू द लाइफ साइड. भैया आप लोग जिंदा हो कि नहीं सब लोग? I will tell you a wonderful report which came across from World Health Organization, which I read, and I would like to share some inputs from there. जिंदा हूँ. जिंदा हूँ मैं. सांस लेते रहो, बाकी मैं देख लूंगा. So yesterday when I was sharing with with the entrepreneurs there, it was wonderful to see. प्रशांत क्या बोल रहा है, सर हम सांस लेते रहेंगे, बाकी आप संभाल लेना. हाँ तुम कांड करते रहो, मैं संभालते रहूं. ठीक है. अरे मैं डोंट वरी, मैं जितना होगा अपनी जान लगा दूंगा तुम लोगों के लिए, डोंट वरी अबाउट इट. लेकिन तुम अपने आप को, अपने कार्य को, अपने कर्मों को अच्छा करते रहो. So I was sharing with the entrepreneurs yesterday that you got to become a lot better in your business, right? And ये जो point आया कि I get upset. We all get upset in life for whatever reasons. What happens outside happens outside. At least what happens inside should be in our control. At least, so let it pass by. Let it pass by. चलिए. अच्छा एक और, sorry, I missed on one more success story. This is a beautiful success story which has come from Chrysalis, Shilpa and Rishi Vishal. And I remember when Rishi joined the batch somewhere around 2018, ऐसा मुझे याद आ रहा है, he joined the batch. So एकदम ऐसा he came and he sat. The first session I have memory of Rishi. I don't know आज वो HM में है कि नहीं है. And very sophisticated guy, very organized, and ऐसा होता है ना कि when you look at the participant तो आपको लगता है ये तो मेरी क्लास लेने वाला है, मैं नहीं लेने वाला हूँ, ये मेरी क्लास लेने वाला है. So he sat there upright for the first day, and I was wondering,
भाई could he connect with me, could he take back something for the day. And वो जब दिन खत्म हुआ, first session of the batch, it's a 1 year long program which he went through. So the first session got over, and he kind of gave me a hug, and he says, I felt so awesome about the entire session. I said, wow, validated. कभी कभी होता है ना, you need some validation from some participants. भाई connect हुआ कि नहीं हुआ, इसको जम रहा है नहीं जम रहा है. So you kind of time and again you look at that participant. So Rishi was that participant who made my first day difficult. But uske baad, the moment he surrendered, it was smooth sailing for him and for me, and the way he picked up a lot of things. So वहां से एक message आया है, and the message says कि today 10th June, मतलब आज का दिन उनका है कि they saying that today 10th June we are celebrating our 25th foundation day, and we are happy to have touched upon lives of 23,000 plus students who have become great leaders at their workplaces. So they are doing awesome work, and they are reaching out to youngsters, to students, of course those who have done their graduation, and they're helping them out in some special IT skills. That's what I know about the organization. So they are into various coding and languages and things like that. They're doing it. So they say we have grown leaps and bounds with our human asset increasing from 15 to 185 in the past 4 years, especially post-COVID. And I remember during COVID time, they had a difficult time because everything was shut. But uske baad jo unhone jump liya has been phenomenal. We have been appreciated for our fair practices and a positive work environment. Thank you, MG sir, for your simple, inspiring talks and happy minds, and all the programs you take, which have always given us the right direction. And thank you, Rashna ma'am, for your lovely pep talk, which has helped me bond with my kid better. That's what Shilpa, she has, Rashna, for you, a lovely message from her that you got her bonded more with her child. And she has a thank you and gratitude for Chrysalis team, Vidisha, and the entire team for being there right throughout. So, Are Rishi is present. He says, present, sir. Good to see you, and congratulations on your annual day today, that you have your silver jubilee annual day functions. It's great. It's awesome. So one of the things which you, if you would understand, 25 years, right? And all those who are entrepreneurs or those who aspire to be entrepreneurs, एक बड़ी अच्छी बात है अगर if you can pick up from here. It's not about the celebrations of an annual day. इन्होंने इतने students को train किया, achieve ये success पाई, all said and done. But what is significant, which I found significant, is 25 years. This speaks of sustainability. This speaks of consistency. It speaks of years of work, years of serving, years of offering something which is meaningful. तो अगर आपके पास कुछ है जो meaningful है, आपके पास कुछ है which is making sense, I think the second thing which you have to have in mind is, can I be consistent with it? Can I give it for a long period of time? तो अगर आपके पास कुछ अच्छा विचार है या मे बी कुछ अच्छे आपके actions हैं, can you sustain those actions for a long period of time? Can you sustain those thoughts for a long period of time? And if you can, then you create a legacy, you leave a legacy behind. That's what I take from this sharing of Rishi and Shilpa. So that's it. चलिए, एक क्वेश्चन है, मैं सोच रहा हूँ आपसे क्वेश्चन आपके सामने रखूंगा, and I want you to think about it, this question, and see if you can answer that. Why would, let me ask it this way. Why would somebody not clean his car? कभी देखा ना आपने, गाड़ियां गंदी होती है, मतलब लोग चला रहे हैं लेकिन वो उसका विंड स्क्रीन गंदा है, सिर्फ उतना ही जितना जहां ड्राइवर बैठा है जितना दिख रहा है वही साफ किया है, वो भी वाइपर से साफ हुआ है, बाहर भी डस्ट पड़ी है, गंदी है, पीछे भी उसका रियर स्क्रीन में भी डस्ट है, किसने लिखा हुआ है साफ करने तो बेच दे उस डस्ट के ऊपर. Why would somebody not clean his car or drive a dirty car? Why would somebody wear shabby clothes? Why would somebody not take care of his skin? In terms of not lipstick, powder, and things like that, but why would not somebody shave his face? Keeping a beard, which is kind of taken care of, is good, but you are just there with unshaven face, and then you are there. Why would somebody not cut his nails and have dirty nails? Why would somebody keep his house, his home
डर्टी, मतलब पेंट निकल रहा है, बल्ब फ्यूज है तो फ्यूज ही पड़ा हुआ है, things are not taken care of. Why would somebody, if you were to go to his organization, तो वो it's a shabby place to work. Why would somebody do that? तो मेरा आपसे एक क्वेश्चन है कि why would somebody stay in that shabby state? Hmm. They may live in dusty areas. As soon as clean their car, it gets dusty in our दे जब वो गाड़ी साफ करते हैं, इट गेट्स डर्टी अगेन, सो वो कहते हैं रहनी दो डर्टी. दे आर बॉर्न लेजी. ओके, हैबिट है, आदत से मजबूत है, ठीक है. टू बिजी टू केयर. आई थिंक ड्यू टू केमिकल लोचा. लेजी है सर, सिंपल बात है, और कुछ बात नहीं है. बिकॉज देयर केयरलेसनेस, आलसी है. अरे बाप. हाँ, laziest habit, ठीक है, ignorance of procrastination, not owning the responsibility of self. They are habitual. Maybe these people are used to these habits. हाँ तो ठीक है ना, बट क्यों वो चेंज क्यों नहीं करते? They're stuck in depression. ay shabash. Waiting for the last waiting for the last moment कि जब कब्र में जाएंगे तब गाड़ी साफ करेंगे. ठीक. Consistent नहीं है. Not enough organized. Driver is doing. अरे ड्राइवर है तो और गाड़ी साफ होनी चाहिए. They do not feel worthy for it. Absolutely. Used to live same life. By chance life जी रहे. Self motivation feel. Okay, great. चलो ठीक है. I got your answers, and all of you what you have written is right. And I'm sorry, I'm not able to. I'm not reading more message, but please do write. बीच में ऐसा पढ़ लूंगा मैं. But I wanted to connect with this very thought that ये आपने भी देखा है और मैंने भी देखा है. It's not something which is unseen, unheard of. कि कोई बच्चा है, उसने अपनी बुक्स का ढंग से कवर नहीं लगा के रखा हुआ है. मतलब बुक्स आ रहे ना शैबी कंडीशन, यहाँ से मुड़ी हुई है, वहां से मुड़ी है, पेज है, अंदर देखो तो there, and you would in school also have your friends, or maybe you would also be that person who would keep your books organized. उसमें अच्छे कवर्स लगा के रखे हैं. And I would get very upset when मेरी जो नोटबुक्स होती थी उसके पेज ऐसे अंदर से मुड़ जाते थे. So I would बार बार मैं उसको प्रेस करके सीधा सिंपल करता था कि ये मुड़े हुए तो ना मिले. And there would be some friends of mine in school जिनके वो पेज मुड़े हैं तो चलेगा, वो पेज निकल रहा है तो सेलो टेप लगा के रखा हुआ है उसने, नहीं भी लगा के रखा हुआ है. And same is the case with the bags. इतना अनऑर्गेनाइज्ड बैग्स हैं, इतने डर्टी बैग्स हैं, क्या क्या अंदर पड़ा हुआ है. तो why would they do that? Why would they come to school with unpolished shoes? Why? तो ये क्वेश्चन जैसे बढ़ते गए, फ्रॉम स्कूल इट बिकेम टू यंगस्टर्स, इट बिकेम टू एंटरप्रेन्योर्स, इट बिकेम टू सो मेनी पीपल अराउंड कि ऐसा क्यों करते हैं, ऐसा क्यों जीते. व्हाई वुड समबडी बी फैट? व्हाई वुड समबडी, वो परस्पायर भी कर रहा है, मतलब उसका पूरा बॉडी मतलब भरी पड़ी है, उसका शर्ट का हर एक बटन जो है वो इतना वो रिक्वेस्ट कर रहा है, हर एक बटन बोल रहा है राजा खोल दे, मुझे खोल दे, मैं मर गया हूं, मेरे को फांसी लग गई है, इतना उस अंदर से उसने कंट्रोल करके रखा हुआ है. तो ऐसा क्यों? Why would people not take care of their health? Why would people not take care of their relationships? आपने किसी रिश्ते की क्यों आपने कदर नहीं करी? आपने उस रिश्ते का आपने ध्यान क्यों नहीं रखा? इन सब का एक ही आंसर आता है अगर आप जाओगे ना इसके डेप्थ में, चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे आपके कोई कस्टमर भी आपका है तो आपने उस कस्टमर का ख्याल नहीं रखा. तो क्यों नहीं रखते आप किसी कस्टमर का ख्याल? उसका आंसर एक ही है. क्यों नहीं रखते आप एक टीम मेंबर का ख्याल? उसका आंसर एक ही है. आंसर ये है, वी डोंट फील द कस्टमर इज वर्दी इनफ टू बी टेकन केयर ऑफ. अगर ये जाएगा ना, इट्स ओके, मेरे पास और भी बहुत कस्टमर है. कभी कभी ऐसा होता है जेन्युइनली कि कस्टमर होता है जो हमें लगता है नहीं है कि ही इज वर्थ कीपिंग. एंड यू शुड आल्सो एज एंटरप्रेन्योर्स बड़ा ध्यान रखना है. इट्स गुड टू एक्वायर कस्टमर्स, but it's also good to fire some customers when you realize they're not worthy enough to walk along with you. Maybe serving them will not make your organization grow. So with deep respect to what they've given to you, you have to say to them, sorry sir, we cannot serve you anymore. So why did you do that? And why would you do that? Because somewhere you felt they're not worth being with you now. Why would you let go of a team member?
because the organization has grown more than what the team member has grown, and now he is a liability in the organization. So you say, "Bhai, we're sorry," or you work in this vertical, or you work in this department. ये department में तू नहीं कर पाएगा because you are not able to offer anything there. You're not worth being in that department. So you put him into some other department, or you ask him to let go of the company. So ये practical aspects in life के कि when we don't think it's worthy, we don't take care of it, right? We let go of it. In the same way, अगर आप अपने body का ध्यान नहीं रख रहे हो, इसका मतलब you don't feel you're worthy. You're not worthy enough to stay fit. When a room is dirty at home, this means somewhere it's not, you don't feel it's worthy to be kept clean. When the car is dirty, this means you think it's not worthy enough to be kept clean. And if I will bring it to this very simple concept, why would people not invest on themselves, whether in the form of buying a book from the market, whether it be investing some money on themselves on training? It's because they don't feel they're worthy. क्योंकि जहां वर्थ होता है ना, हम वहां पैसा लगाते हैं. जहां वर्थ हमें लगता है, हम वहां दांव लगाते हैं. जब आप इंटरव्यू लेते हो किसी का, तो यू फील दिस गाय इज वर्दी ऑफ बीइंग इन द कंपनी, तो आप उस पर दांव लगाते हो, आप उसको हायर कर लेते हो. तो कहीं ना कहीं अगर आप अपने लाइफ से अपने पीछे मुड़ के देखोगे कि इफ लास्ट 6 months, 1 year, or whatever time span you look back, you feel that you have not invested on yourself in terms of buying some simple, decent clothes for yourself, which look good on you. If you're not invested on yourself in terms of going to, once in a while, I always say, you should go and go to a parlor once in a while. It's not only for ladies. Ladies, they go every time in a while. So it's not for ladies. It's for males also. Once in a while, go to the parlor. Get your skin, cleansed, moisturized, and toned, and get your facial done once in a while, because it's worthy. You're worth getting that thing done, right? Once in a while, go and get a wonderful massage for yourself. Why not? You're worthy. You deserve that. Once in a while, you should go and eat in a good restaurant. Why not? So why would you not do it? The answer is because somewhere you don't feel worthy. So ये बड़ा important aspect है. And I see people living a life, not that they don't have means, not that they don't have resources and reserves with them. पैसा है, means है उनके पास, but somewhere they don't use it, because somewhere they don't feel it's worth it. तो हम अपने बच्चे पे दांव लगाते हैं ना, हम बार बार कि भाई इसको हम we'll teach him tennis, we'll send him for a coaching class here, we'll send him. Why? Because we feel it's worthy. He is worthy or she is worthy of being invested upon. तो आपने अपने आप को अपने मन में वर्दी बना के रखना है. The more you have worth of yourself in your mind, the more you will invest on yourself in the form of time, in the form of resources, in the form of training, in the form of some kind of pampering from the outside world. You will keep on doing it for yourself because you think you are worth it. जिस दिन अपने मन से अपना वर्थ खत्म हो गया ना, तो पब्लिक तो वैसे भी निकाल के फेंक देगी. You would give time to a relationship because you feel it's worth it. That's how simple it is. So अगर आपको मैं मिलूं कभी और मैं आपको देखूं in a shabby way, even from the way you dress, even from the way you talk, even from the way you are financially, even the way you are from the way you are driving your car, मैं तुम्हें झाड़ दूंगा. अगर मुझे मालूम पड़ गया कि तुम जो हो हैप्पी माइंड्स अटेंड करते हो, उसके बाद भी shabby रहते हो, तो फिर मैं नाता तोड़ लूंगा तुम्हारे साथ. You got to feel worthy, look worthy. And worthy people, they make sure they are crisp like a new garment. They are crisp like a garment which has come from the laundry shop. एकदम iron किया हुआ, starch लगा हुआ, एकदम crisp लगता है. Because उसने अपने ऊपर invest किया है थोड़ा time, कि वो जाता है सुबह जिम एक्सरसाइज करता है, invest किया उसने टाइम अपने ऊपर. उसने invest किया कुछ किताबें पढ़ने का टाइम अपने लिए. उसने इन्वेस्ट किया है कुछ अच्छे लोगों के साथ रहने का टाइम. उसने इन्वेस्ट किया है कुछ समय, कुछ पैसा on making himself better because he thinks he's worthy. So अगर आप लोग entrepreneurs हो, तो अपने बिजनेस को अच्छा बनाओ.
it's worthy to be invested upon. Hmm? And if you are not entrepreneurs, if you're team members, work hard on yourself, invest some time, money on yourself, make your capability very strong. If you're into sales, learn sales. If you're into finance, learn finance. If you're into production, learn about production. Uske maharati ban jao. And if you become maharati of what you're into, how can you not be successful? Why would somebody not connect with you? It's only when we are at a mediocre level, it's only when we are at a shabby level that people avoid us. And I want to tell you one more time, hey, we all are worthy. We are worthy to be invested upon. जब हम ही अपने ऊपर से हार हम मान लेंगे तो फिर बाकी दुनिया हार ही मान जाएगी ना. सो चलिए, एक रिपोर्ट आई फ्रॉम वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, एंड इट्स अ वेरी, मैं जो पहले तो विश्वास नहीं हुआ उस रिपोर्ट पे, फिर मैंने कहा दोबारा पढ़ते हैं क्या है. सो दोबारा पढ़ा, एंड the figures remained the same. So it was a very थोड़ा सा चौंकाने वाली रिपोर्ट थी, थोड़ा सा हिलाने वाली रिपोर्ट थी. And the report says that out of every 100 people in the world, out of every 100 people in the world, only 11 people make it beyond 60 years of their life. हर 100 लोगों में से सिर्फ 11 लोग ही 60 से ऊपर की जिंदगी का अनुभव कर पाते हैं. The moment I read this, I never thought कि ये नंबर इतना कम होगा. But that's what the World Health Organization report says. And उस रिपोर्ट ने मुझे कहीं झंझोरा हिलाया. And when I went further in the report, तो और भी शॉकिंग लगा मुझे पढ़ के कि only 7 out of 100 they are able to see a life beyond 68 and 70. आप समझ रहे हो? Only 11 out of 100 they see a life beyond 60. Only 7 out of 100 they see a life beyond 68 and 70. And it was a very difficult thing to digest, because आपको लगता ही नहीं कि you can that kabhi you will ever get old, and especially the youngsters who are in their 20s and 30s, उनको तो लगता ही नहीं वो कभी बूढ़े होंगे. It's only when you enter the 40s and you have your early 40s and suddenly 60 starts looking at you, because 60 is at the doorstep. But बहुत से लोगों को वो लगता नहीं. And the more I read about it, the more I felt that, isn't it very alarming that the potential is to live 75, 80 years at least? The potential है कि नहीं कि 80, 90 तक जा सकते हैं? Potential है, लेकिन 100 में से 90 लोग अपने potential को टच करे बिना चले जा रहे हैं. So this is the physical potential we are talking about. It's a very alarming ratio that only 10% of the world's population is able to maximize on the physical potential of a human being. Even just 7% of the world's population is able to maximize on the physical potential of a human being. तो कितना कम परसेंटेज है ये, और ये हमें सोचने पे बात करना चाहिए. इस शेयरिंग ने मेरी आपको सोचने में बात करना चाहिए कि यार, I should be in the 11 and not in that 90. I should be in that 7. I should not be in that 93. तो वो उसके लिए कुछ तो करना पड़ेगा. And then second thing, feel great if you have your loved ones around you who are beyond 70. Feel great. इसी वो 70 में पहुंचने से ही वो वर्ल्ड के 7% पॉपुलेशन में आ गए. मालूम है तुम्हें? The God has been kind. भगवान का बड़ा आशीर्वाद है कि ये वो है हमारे साथ, because 90% people don't stay. तो क्या चीजें हैं जो हम करें अपनी लाइफ में जिससे हम ये 70, 80 हम क्रॉस कर जाएं? गारंटी कुछ नहीं है, लेकिन एक पॉसिबिलिटी तो क्रिएट कर सकते हैं. So there are 10 things which I could correlate with, and I could kind of collect, and if we were to do these 10 things which World Health Organization also says we should do it, तो वो मैं आपके सामने रखता हूं. But provided
you are willing to listen and you feel you're worthy enough to stay in this world for another number of years. Hmm. तो आपको क्या लगता है? Should you, hmm, do you want to stay a long life in this planet? Answer is of course, sir. ये भी कोई पूछने की बात है? आए हैं ऐसी दुनिया में तो जिएंगे. Hmm. But जी के करोगे क्या वो अलग क्वेश्चन है. But basics is, do we want to have a long life? The answer is yes. So what do we do to have a long life? So 10 simple things which you should do. Not that you are not doing it, not that you don't know it. मैंने आपको सिर्फ उसको ऑर्गेनाइज करके दे रहा हूं मैं क्या. कोई अनोखी बातें नहीं है. कुछ बातें ऐसी हैं जो आप शायद कर रहे होगे, कुछ बातें आपको मालूम होंगी, कुछ बातें आपको नहीं मालूम होंगी, कुछ बातें आप नहीं कर रहे होगे. बट मैं उसको कंपाइल करके दे रहा हूं कि अगर आपने ये 10 बातें कर दी, और ऐसा ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन भी बोल रहा है कि अगर आपने कर ली, यू विल बी इन दैट 11%, यू विल बी इन दैट 7%, ऐसा उनका कहना है. और अगर उन्होंने कहा है तो फिर रिसर्च करके ही बोला होगा. और ऐसे बहुत सारे डॉक्टर्स ऑल ओवर द वर्ल्ड, दे वैलिडेट दैट, दे स्टैम्प ऑन इट. तो वो भी सही कह रहे हैं, डॉक्टर्स हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, सब सही बोलते होंगे. तो क्या करना है आपने? तो पहली चीज जो है, मैंने ऐसे 10 पॉइंट्स निकाले, क्या है उनके. अब अभिजीत क्या लिख रहा है? He says, I'm here till at least 90 HM attending your sessions, happy mind with an active mind. अरे वाह, बहुत बढ़िया. हम्म. तो अगर आप, मैं तो इमेजिन कर लिया कि मैं 90 साल तक मैं आपके HM अटेंड करते रहूंगा, ऐसा मैं अज्यूम कर रहा हूँ. दिस मीन्स आई डोंट नो व्हाट हिज एज इज, बट ही सेज आप तो उसके आगे जाओगे क्योंकि he says I'm 50. ठीक है. So I'm going to be 93. ठीक है. Good enough. थैंक यू फॉर दैट. एंड ही सेज मैं तो सर लंबा जीऊंगा, आप भी मेरे साथ जियोगे क्योंकि आपने मरते दम तक आपने हैप्पी माइंड्स लेना है. चलो ठीक है. The first thing which we should do is we got to have enough quantity of water. ये मेरे साथ एक चैलेंज था, मैं पानी कम पीता था. नॉट बिकॉज ये मालूम नहीं था, बट बिकॉज स्केड्यूल ऐसा था मेरा. सेशंस हो रहे हैं एंड आई वुड स्पीक फॉर 8-10 hours इन अ डे फॉर एट अ स्ट्रेच. तो मैं पानी की बोतल तो मेरे पास रहती थी, लेकिन मैं बात करने में इतना मशगूल हो जाता था कि 8 घंटे बात कर रहा हूँ एंड आई वुड जस्ट हैव अ फ्यू ग्लासेस ऑफ वाटर. एंड आई वाज टोल्ड बाय माय डॉक्टर दैट आप बात करते हो, अगर आप 8 घंटा बात करते हो तो आपने कम से कम 5 लीटर पानी पीना चाहिए. बिकॉज़ बात करते-करते आपका मुँह सूखता है, बात करते-करते यू काइंड ऑफ रिक्वायर मोर क्वांटिटी ऑफ वाटर. एंड I realized, I sensed that it is something which I'm not doing right. So a lot of people are not having enough quantity of water. So on an average, ऐसा देख बोला गया है कि 2.5 लीटर पानी तो आपने पीना ही चाहिए. आपको प्यास लगे, ना लगे, it doesn't matter. You have to have your quota of 2.5 liters of water every day. अब 2.5 लीटर एक साथ नहीं पीना है सर. 2.5 लीटर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, तो आप पीजिए. और एक चीज उसमें बड़ा जरूरी करिए, विच आई कॉल एज द इंटरनल शावर. हम बाहर का शावर लेते हैं ना, सो यू हैव टू हैव एन इंटरनल शावर. एंड दैट इंटरनल शावर इज अर्ली इन द मॉर्निंग. हल्का सा गुनगुना पानी आपने 1 गिलास या ½ लीटर, सुबह आपने इंटरनल शावर लेना है. गुनगुना पानी, नॉट वेरी वेरी हॉट, नॉट कोल्ड, जो आपके बॉडी टेम्परेचर से मैच करे और उससे हल्का सा ऊपर रहे. An early morning without having anything, you have that. It will have a huge impact on your lives. Hmm. So that's one thing. So have enough quantity of water. और इसी बात में मैं पानी और पी लेता हूँ. Simple
is my voice audible? Yes, sir. Now it's audible. I think something happened technically. Okay, I was logged out. Pani pure, I was logged out. Okay, so the first thing is have enough quantity of water. But a simple advisor, but yet people miss out on it. I'm saying that if you want to go beyond 70 years of your life, this is one thing which is important. Second is, which is so very vital, so very important. हम लोग कहीं ना कहीं हमारे physical actions बड़े कम हो गए. So, see if you are not stationary at one place for a long period of time. See if you can move around as much as possible. Don't lie for long hours. Don't sit for long hours. Keep your body moving. And ये जो position है आपकी जहां पर आपके movements कम हो रहे हैं, somewhere you will see that over a period of time, your joints will start having an effect. अच्छा ये 30s 40s में ना ये सब बात समझते नहीं है अपने को, because we feel यार ये क्या बातें कर रहे हैं. But the moment you come in your 40s, the moment you come in your 50s, you will realize that these things make a lot of sense, because जैसे आपने पिछले 10 15 20 साल निकाले, वैसे आपके आने वाले सालों का इफेक्ट और ज्यादा खराब होते जाएगा. If you have not lived your last 20 years in a great way. So you got to be physically moving, right? उसमें आप अपने exercise join कर लो, but still you may go to the gym or you may go for a jog, you may go for a walk in the morning or evening, लेकिन that does not compensate for the entire day. वो 1 घंटे से आप 23 घंटे को undo नहीं कर सकते. तो मैं आपसे जो कह रहा हूँ ये एक्सरसाइज की बात नहीं कर रहा हूँ. मैं आपसे वो एक्सरसाइज आप करोगे, लेकिन उसके अलावा भी दिन भर जो है आपने you don't have to be in a static position. You have to be dynamic. You have to keep on moving in some way or the other. Ensure there is some physical activity happening. There is some momentum happening in your life. Otherwise, body के जो आपके joints हैं, जो आपके muscles part हैं, जहां पर आपका movement होना है. See, every joint has 2 muscles to it. Every joint. Doctors will tell you a lot more. So अगर एक finger है मेरी, तो एक muscle इधर है और एक muscle इधर है. So it is a combination of 2 muscles. So one muscle will pull it down if I have to bring my finger down. One muscle will bring it up if I have to bring my finger back. So normally all the joints will have 2 muscles. ये 2 muscles का use होना बड़ा जरूरी है. And that is why stretching is a must when you do exercise. But दिन भर भी आपने movement करना है. That's second thing. पहले पानी पीजिए. Second, movement रखिए अपनी body के अंदर. Physical exercise is separate from this, right? Third thing, eat only that much which you need to eat. Eat only that much which you need to eat. वो गधूस के माफिक भरना नहीं है कि कहीं गए शादी में बुफे में वहां देखा खाना पड़ा ये भी खाओ मैक्सिको. अरे जिसकी शादी है उसने 10 तरह के मेन्यू लगाए. उसने मैक्सिकन भी लगाया, उसने साउथ इंडियन भी लगाया, उसने नॉर्थ इंडियन भी लगाया, उसने चाट भी लगाई, उसने चाइनीज भी लगाया, उसने सब लगाया. क्योंकि उसकी शादी है, उसको लगा कि यार सब वैरायटी होनी चाहिए. अब उसने लगाया, इसका मतलब ये नहीं कि आपने सब खाना चाहिए. आप पे कोई कंपल्शन नहीं है कि आपने सारा खाना चाहिए. उसको बिल्कुल बुरा नहीं लगेगा अगर आपने सारा नहीं खाया. इनफैक्ट उसको अच्छे लगेगा. अरे उसका प्यार से आप मत मरो, उसकी मेहमान नवाजी से आप बीमार ना पड़ो. सो कुछ लोग अपना एक कहते नहीं हमारा कर्तव्य है सर, हमें शादी में बुलाया है, हम इस कोने से चालू करेंगे उसका स्टॉल्स में और आखिरी कोने तक सर हम जाएंगे, हमारा ये प्रण है, हमारा ये कर्तव्य है और हमारा प्रण भी है. हम सारी स्टॉल्स को पे हम चखते हुए खाते हुए जाएंगे, चाहे वो हमें पसंद आए ना आए, चाहे हमारी बॉडी को लगे ना लगे. तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है उतना ही खाइए जितना आपको जरूरत है. और मुझे लगता है कि जब आपको ऐसा लगता है कि हो गया, बस उसी में बंद कर देना चाहिए. Eat one chapati less than what you normally eat. I think that's the way it is. So a lot of people, उनकी philosophy life की कैसे है, they live to eat, whereas you should eat to live, right? उतना ही खाओ जिससे जिंदा रहो. I think that's so very important. And जितना जल्दी शुरू करोगे उतना अच्छा आपकी लाइफ में ये होगा. So sir, when will we get such opportunity to eat such variety? हाँ, स्वर्ग में मिलेगी. मैं बता रहा हूँ तुम्हें, स्वर्ग में वैरायटी छोड़ो, रंबा शंबा सब मिलेगी तुम्हें. हाँ, वहीं जाके खाना. चलो ठीक है. सो आई शेयर विद यू, पानी पियो, राइट, फिजिकल मूवमेंट करो एंड खाना उतना खाओ जितना आपको जरूरत है. ठीक है.
Third, fourth thing which you should do is गाड़ियों का इस्तेमाल कम से कम करो. ये हैबिट की बात है. So we are going into 50s and 60s and that time. So use as less as possible. Only when it is compulsory that you have to travel long distances, you take the vehicle. अगर कहीं बाजार से सामान लेने जाना है ना, why to use a vehicle? Walk ना. Why don't you just allow yourself to go for a walk? And it may just be inconvenience of 5 minutes, but एक हैबिट की बात है. अब क्या हो गया है, हमें कुछ अगर बगल में भी चाहिए, 100 मीटर दूर है, स्कूटर चालू किया, चले गए, गाड़ी चालू करी, चले गए. Why would we walk? So many times me and Rachna, we walk to the market from our home, which is around a kilometer from my home. तो ऐसे walk करते करते हमारा 1 किलोमीटर जाना, 1 किलोमीटर आना, 2 किलोमीटर वैसे हो जाता है. And it's a good walk, we have a nice chat and we time लगता है, but then that's the way it is. Why to take the vehicle? It's only when it's an urgency कि अभी चाहिए. Then of course we take the vehicle out and we buy things. But otherwise 90% of the times we both walk to the market. We both walk to get the basic things done. I think that's a habit. And that's a habit which if you build, you will see the habit will continue where it will continue to in your other functions also. कि जहां पर आप lift नहीं लोगे, आप staircase ले लोगे. So avoid lift as much as possible. Use the staircase as much as possible. तो ये आदतें automatically कहीं ना कहीं देखो आपके life में आती जाएंगी. So these are simple things, but I want you to be in that 90, in that 90. I want you to be in the 11 percentage category. I want you to be in the 7% category that we survive and we continue living a long life. Now, the fifth thing which you got to do is, again, put a board somewhere in your home and it should say that I am in control of my anger, or I maintain calm nature. I'm cool and calm. Anger is one thing which over a period of time, with age, it reduces your immunity. It kills a lot of your neurotic cells in a way which cause harm to your mental development. It is creating a lot of acid inside your body, which kind of destroys your internal organs. चाहे वो आपका heart हो, चाहे आपका वो digestive power हो. आप देखो ना, जब आप गुस्सा करते हो, you have more acidity, you have your digestion goes for a toss, your heartbeat increases. तो ये सब हो जाता है ना. So see if you can be calm as much as possible. The fifth way by which you have a long life. The sixth is, it's okay if a lot of things did not happen your way. Don't have regrets. जितना कम हो सके रिग्रेट्स की दुकान को कम रखो. ओके, नहीं हुआ तो नहीं हुआ ना, और जितना कर सकते हो उतना करो. दोनों चीजें, जितना कर सकते हो करो, और जो नहीं हो पाया, जो होगा भी कि बहुत सारी चीजें नहीं हो पाएंगी बिकॉज भगवान नहीं है. 10 चीज सोचेंगे तो 5 ही होंगी, 6 होंगी, बाकी 4-5 नहीं होंगी. जो नहीं होंगी ना, नहीं होंगी. लेट्स नॉट रिग्रेट अबाउट इट कि अरे बचपन में ये नहीं किया, जवानी में ये नहीं किया. इट्स ओके ना, इट्स गॉन, इट्स गॉन. The more you have regrets, the more you reduce your lifespan. Let's have as less regrets as possible. Next wala hai, which I wrote down, was the desire for money. This is one thing which creates a lot of anxiety. The desire for money. I'm not saying don't have money, but ye high paisa, this jitna ye karoge utna anxiety badhaoge. See if you can ask yourself what kind of a life I want. And for that life which I want, how much money I want. And I think a lot of you will realize that for the life which you want, you have decent amount of money. And if you want a life which is bigger than that, then let's go into asking ourselves, how do we earn that money? But a lot of people have money to live a great life. Still they have this money in their mind. Understand money. कि money का concept क्या है? See, money is like fuel. It's just like fuel. So when we say fuel, what does it mean? कि आप जब गाड़ी लेते हो ना, तो आप गाड़ी में fuel डलवाते हो, और fuel क्यों डलवाते हो? Because बिना fuel के गाड़ी नहीं चल पाएगी. So is fuel very important? Yes, very important. Right? Why? Because the vehicle will not run without fuel. Good enough. So the objective of fuel is to allow the vehicle to go from one place A to place B. ये fuel का काम है. लेकिन आप
फ्यूल से इतनी मोहब्बत कर लेते हो कि आप कहते हो मैं गाड़ी में फ्यूल ही भरते रहूंगा। मतलब गाड़ी के अंदर जो है पैसेंजर नहीं बैठेंगे, फ्यूल बैठेगा। तो सीट में फ्यूल रखा है, उसके कैन रखे हुए, जगह जगह आपने फ्यूल भर दिया। तो आप कह रहे हो कि नहीं, गाड़ी का मकसद है फ्यूल को इकट्ठा करना। गाड़ी का मकसद फ्यूल को इकट्ठा करना नहीं है। गाड़ी का मकसद है फ्रॉम प्लेस ए टू प्लेस बी जाना, और उस प्लेस में जाने के लिए गाड़ी को फ्यूल लगता है। दैट इज द पर्पस ऑफ फ्यूल। इन द सेम वे मनी का मकसद हमारी लाइफ में उतना ही है कि हमें एक जगह से दूसरी जगह ले जाए, हमें एक अच्छे कपड़े पहनने से और अच्छे कपड़े पहनने पे ले जाए, हमें एक अच्छे घर से और अच्छे घर पे ले जाए, हमें एक अच्छे काम करने के तरीके मशीन से एक और अच्छी मशीन पे ले जाए। ये पैसे का मकसद है, ये फ्यूल है। लेकिन क्या हो रहा है, हम वो मकसद पूरा नहीं कर रहे, हम पैसे को और इकट्ठा, हम फ्यूल पे फ्यूल इकट्ठा करते जा रहे हैं। दिन भर फ्यूल चालू है, अरे उस फ्यूल का करोगे क्या? दैट इज द प्रॉब्लम। सो ये मनी के ऊपर आई कैन टॉक अ लॉट, आई कैन टॉक आवर्स ऑन दिस कॉन्सेप्ट, द वे आई हैव सीन पीपल getting anxious about money. So reduce the anxiety which money gives to you. And I feel have a proper money management concept and work on that. The next is see if you can build some beautiful relationship with your younger generation. जो आपसे छोटे हैं ना उम्र में, उनसे अच्छा रिश्ता बनाओ। हम क्या करते हैं, नॉर्मली बड़ों का आदर कर लेते हैं और अपने जो साथ के लोग हैं उनसे हम लोग कनेक्ट कर लेते हैं। बट जो यंगर जनरेशन है, somewhere we go into some kind of a conflict with them. When you have great relationship with the younger generation, the love which they give to you, it increases your lifespan. When you learn from the younger generation, when you allow some communication to happen with from the younger generation, it kind of adds on to your life. आपके जो साथ दोस्त हैं वो तो मैं आऊंगा उस पॉइंट पे, लेकिन जो यंगर जनरेशन है, तो जो आपसे छोटे हैं, उनसे जब आप अपने उनके लेवल पे आके आप कनेक्ट करते हो, तो देयर इज सो मच व्हिच हैपेंस। यू समवेयर बिकम विनम्र हो जाते हो, आप सॉफ्ट हो जाते हो, आपका ईगो ड्रॉप हो जाता है। द ईगो स्टॉप्स यू फ्रॉम गोइंग डाउन। सो छोटे, चाहे वो आपकी टीम में आपके लोग हो जो आपसे छोटे हैं, बट इफ यू कैन allow them to be a part of your life in a way where they can contribute in some way, you will see that the feel good factor is so wonderful, so very wonderful. The next point is, of course, this उसमें काफी वीडियोस बने हैं, काफी बातें हुई हैं, friends are the ultimate, you know, दोस्त हैं तो जान है, and things like that. Of course, you should have a few friends around you with whom you can chill, you can relax, you can talk nonsense, you can do bakwas, you can be you can do hangama. And if you have such friends with you, trust me, you will add on years to your life, that's for sure. एंड कहीं ना कहीं लोगों ने काम करने के चक्कर में, अपने आप को बिजी रखने के चक्कर में, ये अपनी वीकली डोज, ये एक वीकली मीटिंग्स विद देयर फ्रेंड्स, ये उन्होंने कम कर दी हैं, बंद कर दी हैं, या बहुत ही लिमिटेड हो गई हैं। एंड आई थिंक दैट्स वन वंडरफुल सोर्स फॉर अ लॉन्ग लाइफ। एंड द लास्ट पॉइंट which is there, okay, as you go into age, it's just a number. So don't allow आपके अगर बाल सफेद हो रहे हैं, don't allow your gray hair to make you feel old. And if you feel that your skin is sagging in some area, don't make it make you feel old. In fact, keep your dreams alive, and keep yourself looking forward to life. अभी बाबूजी गए, he went back home to उत्तराखंड। जाने से पहले अपना पासपोर्ट देके गए मुझे बाबूजी। तो मुझे बोले कि बता अभी कहाँ जाना है मुझे। And he's got his dreams alive. He wants to travel the world. And he's called me twice कि तूने क्या किया, मेरा कुछ वीजा का अपॉइंटमेंट हुआ कि नहीं हुआ, मैं कब आऊं वीजा के अपॉइंटमेंट के लिए। He's so very excited about it. So I feel that no matter what your age is, this longing to see the world, the longing to travel, the longing to explore, the longing to do things which will make you young should always be a part of your life. And why would you not then go beyond 60, and why will you not go beyond 70? Why would you not go beyond 80? सिंपल चीजें हैं यार, ऐसा नहीं कि आपको मालूम नहीं थी। तो मैंने हल्का सोचा कि उसको कंस्ट्रक्ट कर दूं एंड आपसे शेयर करूं। सो लेट योर years, every birthday you grow by one more year, let them not disturb you. You still keep your dreams alive. ये शरीर थोड़ा सा हो रहा है ना, इसको भी जितना हो सकता है यंग रखेंगे, लेकिन ये तो बच्चे के माफिक होना चाहिए
The mind should be just like a child who has just got his senses and he's just become an adult and he's waiting to explore the world. That's the way it is. That's how you should be at your 60s and 70s. जब उमंगे जिंदा होती हैं, जब desires alive होते हैं, तो फिर देखो उम्र भी आपकी शरीर भी आपका साथ देती है. Am I right or not? तो जिसके अंदर उमंग नहीं है, desire नहीं है, उसका शरीर भी कहता है यार जब तूने सोच लिया कि अभी नहीं है तो फिर मैं भी क्या कर रहा हूँ धड़क के. तो दिल भी धड़कना बंद करता है, स्पेयर पार्ट्स एक करके गिव अप करना चालू करते हैं. And that's how it is. So this is what I had to share with all of you today. And Rachna says, and he has found my father as a traveling partner. तो वो उन्होंने मेरे फादर इन लॉ को, रचना के फादर को वो मिले अभी कुछ दिन पहले, उनको पटाया और उनको कहा भी हम दोनों जा रहे हैं. तो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू सेंडिंग देम टू यूरोप नेक्स्ट मंथ और सो. तो उनको he wants to see तो my father-in-law has not been outside of India. He's not traveled outside. तो हमने कहा आपका पहला ट्रिप तो अभी करना है, अभी तो आपको भेजना है. एंड उनके साथ मिल गए मेरे फादर, तो बाबूजी और ये दोनों बाबूजी मिल गए. तो अभी खूब मिलेंगे, क्या खूब जमेगा रंग जब मिल जाएंगे दो ट्रैवलर एक संग. तो ये दोनों जाएंगे. The youngsters in their old age, they will go and they will explore the world, and I'm sure they'll have a great time. So simple 10 बातें हैं, इसको करो. Don't wait for 60 to strike you and make you realize this. You are in your 30s listening to me, use it. You're in your 40s, you're in your 50s. I don't know with what age you have, but ये simple 10 बातें हैं, करना शुरू करो. And I'm sure हम WHO का रिकॉर्ड चेंज करेंगे. हम उस 11% को 12 करेंगे, 12 को 15 करेंगे, 15 को 20% करेंगे. ऐसा हो जाए कि अगले 10 सालों में ये रेशियो चेंज हो जाए and 20% people live beyond 60, 15% people live beyond 70, and more than 10% people live beyond 80, 90. और उसमें हम लोग हों. ऐसा हम ये वर्ल्ड का पूरा डायनामिक्स चेंज करें. ऐसी ताकत और काबिलियत हम सब में है. And that's what I pray and wish for all of you and from myself too. So that's how simple it is. Hanji. So you were there. Can it work? So I'll see you next week, next HM with another lovely subject, and I'm sure you're connecting with the best you every week, and keep on creating a better version of yourself. And stay young and do all the things which I said today, along with exercise, along with your job, along with your work, along with your relations, along with your all that which you're doing. उसके साथ साथ ये 10 चीजें और ऐड कर लो. So God bless you, and I'll see you